what is the value of current I at O in the adjoining circuit. We have to find the value of current at O. O is a junction, so we'll apply junction rule here. Current, incoming current, we can consider as positive. Incoming current can be considered as positive, and outgoing current will consider as negative. Okay. So let's find the net current. How will you find? We have 8 ampere. 8 incoming currents, we have 8, 5, and 3. Okay, just write this first. 8 ampere plus 5 ampere plus 3 ampere. Minus outgoing current is 7 and 2 ampere. So it's 13 plus 3, 16, minus 9 ampere. Answer is 7 ampere. The network PQRS shown in the circuit diagram has the batteries of 4 volt and 5 volt and negligible internal resistance. A milliammeter of 20 ohm resistance is connected between P and R. Calculate the reading in the milliammeter. So we have to find the current value of current flowing through this millimeter. Through PR. What current is flowing, that we have to find out. So we'll apply Kirchhoff's rule here, junction rule, loop rule. Yes, so we are going to apply these rules here to solve this problem. Well, let I be the current flowing through this 5 volt cell. So this is the junction. So here the current will split up into 2. So let I1 current is flowing through this branch and I minus I1 current is flowing through this branch. Okay. Through this branch, I minus I1 current is flowing. It will go to the 60 ohm resistor also. And it will reach here. When it reaches at this point R, again, R acts as a junction. I1 current is flowing in this direction and I minus I1 is coming towards R from this direction. So they'll meet at this point. I1 cancel ho jayenge. So we will have I current only, and this I current goes through this 200 ohm resistor and it will again move to the cell. Okay, so this is how we can draw. So consider first loop, yes, P, Q, R, P. Let's consider this loop first, P, Q, R, P. PQRP. If we consider PQRP, see, we are taking the direction of current towards positive terminal of the cell. So we'll write this as negative. So it's minus 4. Minus 4, no? And we'll not write plus 4, it's minus 4. Again, and it's minus 4, and again for 60, it's a positive sign. It's a positive sign. So plus 60, I minus I1. And then, because we are considering this loop, then we'll go to this branch. Q to R and then R to P. So Q to R is positive. R to P, we are going against the direction of current. Again, we'll put a negative sign. I minus I1 minus 20 I1. This is one equation. We can simplify this equation. Okay. On simplifying this equation, we will get 20 I1 minus 15 I is equal to 1. Let this equation be 1. You solve this equation. Now consider another rule. Directly divide कर दिया. Yes, we can take the factors out now. It's 60 I1 and 20. 60 and 20 is 80. And we have, sorry, yes, 60 and 20 is 80 I1 and 60 I and 4. All are the factors of 4. No? All are the factors of 4. Now consider another loop.
Consider this loop now. P R S P. Consider the loop P R S P. Again, form an equation. It's 5 is equal to. Now we are going in this direction. Hai. So 20 I1 is positive or negative? Positive. Yes. And we'll go to this resistor now. 200I. Again, it is positive. 200I. Okay. On simplifying, what will you get? 4I1 plus 40I is equal to 1. We'll get this relation. Let this be 2. Okay. Is this clear? By comparing coefficients, we can solve this. Here we have 15I. Here we have 40I. We want to cancel this. We want to remove this I because we want the value of I1, not I. In the question, it is asked that calculate the reading in the milliammeter. मतलब उससे I1 ही flow होगा. हमें हमारा जो फोकस है वो I1 है. हमें इसको बॉदर करने की जरूरत नहीं कि what the value of I is. We don't need to bother it. Botherance हमारा यही होना चाहिए I1 जो हमें क्वेश्चन में पूछा है. और फिर वही बात है सॉल्व कर देते हैं फिर I1 की निकालते हैं. So let's multiply, by compare the coefficients. There are a number of ways. Using determinant method, you can find out comparing coefficients. Yes, give me the answer. Multiply this by 8 and this by 3. Get 8 to the 16, 160 I1 minus 120 I is equal to 8. And here you will get 4 is at 12. 12 I1 12 I1 plus 120 I is equal to 3. On solving this, you simply add them. Add them. 11 by 1. Here you will get 172 I1 and here you will get 11. So I1 is 11 upon 172 ampere. And in decimal, it is 0.064 ampere. Okay, so this is the reading of this milliammeter. Find the current drawn from the cell. So we have this combination of resistors. We have to find net current. For net current, we need to find equivalent resistance first, only then we can find. Yes. How will we find equivalent resistance? This is the question. हम 2 ohm जो है वो 5 ohm और 4 ohm के साथ पैरेलल में. Now look at all these resistors. बहुत ध्यान से देखना है इनको. You will find that this 5 ohm, it is, connected with this R2 resistor. This 5 ohm resistor is connected with R1 from this end. And from this end, it is connected with R1 and R5. No? And if I want to redraw it, then how will I redraw? This is the question. See, मैं क्या करने वाली हूँ अभी? I'm going to draw R1 here, okay, and R5 here. No, this is not looking nice. Let's redraw. हाँ, पढ़ने में ध्यान नहीं बेटा. पढ़ने के अलावा सब कुछ करेंगे हम. We have only 2 questions left.
पढ़ने के अलावा कुछ भी करवा लो, बस पढ़ाई मत करवाओ। वही चीज है जो हम नहीं कर सकते। नो, एक्सेप्ट कर लिया बस। इससे बढ़िया इससे ऑनेस्ट क्या हो सकता है? अच्छा, अब ध्यान से देखना, ठीक है? जो मैं बताने वाली हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ही ध्यान से। दिस R5, ये वाला जो एंड है R5 का, this end of R5, this sorry R2, this end of R2, this resistor, 5 ohm resistor is connected with R1 and R5. So if we draw this R5 here, then it's this end, one end, now the same end is connected with R1 and R2, R5. No, एक मिनट, ये R5 नहीं था, ये R2 है ना? This is R2. Actually, I'm getting confused between R2 and 5 ohms. So this is R2, na? This R2, this end of R2 is connected with R1 and R5 at the same end. Na? These three are connected. So R2 is here. We can write R1 here and R5 here. We can write like this. आप ना इसको ऐसे नहीं देखना कि हे भगवान कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, हाउ आर वी गोइंग टू डू। पैनिक नहीं करना बेटा। वायर्स को देख, ये तारे हैं, जुड़ी हुई हैं आपस, ठीक है? तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमारे पास 3 वायर्स हैं, एक वायर R1 में जा रही है, एक वायर R2 में जा रही है, एक वायर R5 में जा रही है, और ये देखो ये जॉइंट है, वायर जॉइंट है ये, है ना? तो इस वायर जॉइंट से ये तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो ये हमने जॉइंट बना दिया, तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना? नाउ लुक एट द अदर एंड ऑफ द यही चीज दूसरे सेम वाले रेजिस्टर। उसमें हो रही है ना, वो वाला जो 5 ओम और 4 ओम के बीच। यस, अब इसको यहाँ इसके एंड को देखो, दूसरा एंड है ना इसका, अनदर एंड इज दिस, ठीक है? अब इस वायर, यहां से जो वायर है, एक R2 में जा रही है, एक R3 में जा रही है, और एक R4 में जा रही है ना? तो एक R2 में जा रही है, और एक अब जो एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें। R4 देखो, इस जॉइंट से जो वायर R3, ये जो R3 है ना, जो R3 से निकल रही है, और जो R5 का जो दूसरा एंड है, यहाँ से जो R2 और R3 है ना, यहाँ पे एक वायर जा रही है R3 में और एक वायर जा रही है R4 में। अब R4 किससे कनेक्टेड है? R4 का वन एंड तो 5 से कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है। R4 का वन एंड R2 से कनेक्टेड है, और R4 का अनदर एंड R1 से कनेक्टेड है, मतलब R4 ये वाला होगा, नहीं? अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको? नहीं कर पा रहे हो? R5 का अनदर एंड ये R5 का, जो वायर R5 जो सॉरी, फिर R5 R2, R2 का दूसरा एंड जो है, ये R2 का दूसरा एंड है, ठीक है? R2 का दूसरा एंड हमारा यहाँ पे है, ठीक है? ये एक R4 में जा रहा है और एक R3 में जा रहा है, ये तो समझ आ गया। बट अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि R4 का दूसरा एंड किस में जा रहा है, तो R4 का दूसरा एंड R1 में जा रहा है, तो R4 का दूसरा एंड R1 में जा रहा है, और ये वाला एंड R2 में जा रहा है, ठीक है? ऐसे ही we can look at this R3. One end is connected with R2, and other end of this R3 is connected with R5. So one end is connected with R2, and other end of this R3 is connected with R5. So this is R3. This is how they are connected. है ना? Easy था ना? Now you can find the equivalent resistance. For this, we need to find, for current, we need to find the equivalent resistance first. Okay, we need to check one more thing. See, this R1 is 1 ohm, this R4 is 2 ohm, and this R3 is 4 ohm, R5 is 2 ohm, and R2 is 5 ohm. Yes. So for this, we need to check whether the ratios are equal or not. So we have to check if R1 by R5
and R2, R4 by R3. Are they equal? Yes. They are equal? Yes. Here we are getting 1 by 2. Here we are getting 2 by 4. 2 by 4 is 1 by 2. So they are equal. So this is a Wheatstone bridge. It is balanced. It is a balanced condition. So potential difference, potential drop, across this and this is same. We have the बीच वाले को neglect this. है ना? Potential drop, potential difference जो होगा between the opposite ends is 0. We can neglect this. Now we have two resistors, these two resistors in series and these two resistors in series. We can find the equivalent resistance. अब हो जाएगा 1 2 1 2 3 आ जाएगी. R1 and R5 ये एक पेयर फॉर्म कर रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन. So what is the equivalent resistance of this combination is 3 ohm. And what is the equivalent resistance of this combination? R4 and R3. It's 6 ohm. Now we have 3 ohm and 6 ohm in parallel. Find the net resistance, effective resistance. It's R1 R2 upon R1 plus R2. So no, it's not R1 R2. No, we cannot write like this. Let's take this as R dash and this as R double dash. So this is R dash, R double dash upon R dash plus R double dash. Find the equivalent resistance. 3 into 6 upon 3 plus 6. 18 by 9, it's 2. Now find current. Current is E upon R, 4 volts upon 2. Current is 2 ampere. Difficult था. आपने समझाया था मेरी सबसे पहले. Thank you so much. आपको मेरा समझ आ गया. Yes, हाँ जी, विवेश एंड गौरिका. डिफिकल्ट था. यही प्रॉब्लम होती है कि आप खुद से नहीं सोच पाते ना ऐसा. बेटा फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम तो करवाना ही पड़ता है. करवाने के बाद आ गया ना, बस वो आ जाना चाहिए. अगर मेरे समझाने के बाद नहीं आया तो प्रॉब्लम है, फिर दोबारा करवाना पड़ेगा. बोर्ड में तो प्रैक्टिस करो ऐसे ऐसे सर्किट्स की. जैसे अगर आपको लगता है कि सेम सर्किट तो नहीं आने वाला, डिफरेंट भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस करो. आपने बस इसको वायर्स की नजरों से देखना. आपने ये नहीं देखना ये इलेक्ट्रिक सर्किट और साइंटिफिक टर्म्स ऐसे यूज नहीं करना. ये तारें जुड़ी हुई हैं, कौन सी तार कहाँ जुड़ी हुई है, बस वो देख लो. इस तार के साथ ये यहाँ जुड़ी हुई है, इस तार के साथ यहाँ जुड़ी हुई है. इसी के बेसिस पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो. आप खुद अपना व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर सकते हो, है ना. तो मॉडल आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो. वर्किंग मॉडल डिफिकल्ट थोड़ी है, वायर्स तो ज्वाइन करनी है. नहीं गौरिका, भिवेश. So see, a battery of 10 volt. So this is 10 volt. And negligible internal resistance is connected across a diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. We have to find equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. So let's consider 6 ampere current, 6I current, sorry. ठीक है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है हमारा 6I फ्लो कर रहा है. ठीक है, total current is 6I and this current is divided into 3 equal parts at this point. Let this point be A, let this point be B, this is C, this is D, and this point be K, L, M, and N. Okay, so this 6I current is entering at this point, at this junction A. So this current will split up into 3. Okay, so 2I current goes to branch AB and 2I current goes to branch AD and 2I current goes to branch AL. Okay, now look at this again at B. We have a junction. So this 2I current again will be distributed into II. Now we have I here and I here. In the same way, this 2I current is going to this junction L. है ना, ये junction L में जाएगा. Again ये I और I में divide हो जाएगा. Similarly, we have this current 2I. All the 2Is that you have now, they'll reach the junction and again we will divide the current into 2 equal parts. I and I again. Yes, any doubt in this?
अब क्या करना है हमने नेक्स्ट, अब बहुत ध्यान से देखना है हमने। जंक्शन सी पे यू कैन सी, एट जंक्शन सी current from D and B are meeting at this point, है ना, at this junction. So through this wire 2I current will flow towards N. Yes. Similarly, yes, ये यहाँ जाएगा ना. Yes, this current is going in this direction, and this current, हाँ, ये 2I हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही यहाँ पे भी 2I हो जाएगा. एम वाला, बी एम वाला करंट और एल एम वाला करंट, देखो ध्यान से, बी से एम जा रहा है जो, और फिर एल से एम जा रहा है, वो जंक्शन एम पे 2I हो गया, और जंक्शन एम पे 2I होके यहाँ एम टू एन 2I जा रहा है. ठीक है, एल से के में और डी से के में जो करंट जा रहा है वो 2I हो गया, और फिर जंक्शन यहाँ पे के पे 2N हो गया, 2I हो गया, और 2I यहाँ पे एन पे जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा करंट जो है कलेक्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑल द थ्री ब्रांचेस. यू कैन सी MN, CN and KN. Look at these, MN, CN and KN, they are meeting at point N. So अब करंट दोबारा हमारा 6I हो गया, और वापस जितना गया था उतना वापस अंदर आ. ठीक है, this is the circuit. Okay, any doubt in this? I hope this is clear. Now let's consider this point B. Let's take EMF, we write like this. Okay, so consider the loop ALK NEA. ALKNEA. ठीक है, ALKNEA, दिस लूप, ये जो बाहर बाहर है ना ये वाला, दिस पार्ट वी आर कंसिडरिंग. ओके, नाउ अप्लाई द loop rule here. So we are assuming that, you know, resistance of each branch, we can take R, small r, as the resistance of each branch. Yes, है ना, small r as the resistance of each branch we can take. अब इसमें लूप रूल लगाओ. 2I current is flowing through this branch AL, through branch AL 2I current is flowing, resistance is R, so we can write 2IR. So AL2 we are going to K now, A to L and then L to K. Current I is there and resistance is R, so we'll write IR. Again K to N जाएंगे, so K to N current is 2I and resistance is R, so it's 2IR. It is equal to, now see, we have to find, you know, equivalent resistance across these two diagonally opposite ends, A and N. एक मिनट बेटा, let me complete this first. Let R be the equivalent resistance of this circuit, capital R. We can assume capital R as the equivalent resistance of this circuit, and we are finding equivalent resistance across two diagonally opposite end of the cube, and diagonally opposite end is AN, na? So we are finding equivalent resistance across AN. So we can assume that equivalent resistance is capital R, and the current flowing in the circuit is 6I. How do we write current, voltage, and resistance using Ohm's law? We can write P is equal to IR. Total current is 6I and total resistance is R. Total resistance we are taking is R, so it's 6I. So using Ohm's law, we can write 6I into capital R is equal to EMF, E. No? So we are assuming R as the equivalent resistance.
R as the equivalent resistance. Now we can compare these two. From 1 and 2, we can write 6IR is equal to 5I small r. This implies R is equal to 5 by 6 R. Enclose the answer in box. This is the equivalent resistance. Equivalent resistance we have taken R, capital R. So we have found out the equivalent resistance of the network. Now we have to find current which is flowing through each edge of the cube. How do we find current through the battery? How do we find current? बताओ. Current I is equal to total resistance. Total resistance is R, equivalent resistance. Okay, so E is 10 and total resistance is 5 by 6 into small r. What is the value of small r? 1. It's 1 ohm. Small r is 1 ohm. Put the value here into 1. So you'll get current. 12 ampere. So 12 ampere is the current. Is the value of I. Yes. Now, see, we have to find current through along each edge of the cube. ठीक है, नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस तो नेट करंट आएगा, तो ये आई आपका नेट करंट है 6 आई. ठीक है, क्लियर. तो इट्स 12 एम्पियर. तो दिस इज द नेट रेजिस्टेंस. अब 12 एम्पियर अगर इसमें से जा रहा है तो ब्रांच में से करंट निकालना है आपने. तो यहाँ पे आपका 12 एम्पियर गया. ठीक है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम हियर. आई इज 2 एम्पियर. ठीक है, तो जो जहां जहां पे 2 आई है वहां पे करंट 4 एम्पियर है और जहां पे आई है वहां पे 2. अपने आप करोगे मैं करूँगी? पहले ट्राई करो, पहले बनाओ इसको. We have two source of EMFs. ठीक है, this is first source and this is second source. We are assuming that I1 current is, flowing through this cell. So this I1 current when goes to this junction at point A, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो we are assuming that I1 में से जो I2 करंट है वो चला गया टुवर्ड्स AB और बचा हुआ करंट जो रिमेनिंग करंट होगा दैट वुड बी I1 माइनस I2 एंड दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस AD. करंट डिवाइड हो गया ना, I1 डिवाइड हो गया 2 में, तो I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू AB एंड रिमेनिंग करंट इज I1 माइनस I2, इट इज फ्लोइंग थ्रू AD. इतना क्लियर हो गया? डन, गुड. अच्छा, अब चलो जी, अब आगे आ जाओ. यहाँ पे वी हैव दिस जंक्शन हियर एंड जंक्शन हियर. ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब दिस इज अनदर सोर्स ऑफ EMF. इट इज प्रोड्यूसिंग I3 करंट. तो दिस I3 करंट इज गोइंग टू जंक्शन B. अब आपने बहुत इसको ना सोचो कि क्या हो रहा है. ये I3 करंट इज गोइंग टू जंक्शन B एंड यहां से पीछे से I2 करंट इज कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन B. बोथ आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो थ्रू दिस वायर I2 प्लस I3 करंट विल फ्लो. क्लियर है? Yes. अब क्या होगा, अब देखो ये जंक्शन है यहाँ पे. अब यहाँ से जो I2 प्लस I3 में से जो I1 वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, बिकॉज I1 हैज टू गो टू द सेल, द सोर्स ऑफ EMF. ठीक है, तो I2 प्लस I3 में से I1 वाले पार्ट को रिमूव कर दो, निकाल दो उसमें से, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा. उसके बचा कितना, I2 प्लस I3 तो था, उसमें से माइनस I1 करके वो नीचे चला जाएगा. अब जो टुवर्ड्स D आ रहा है वो I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रहा है. क्लियर है? डाउट नहीं? चलो, अब पीछे से यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, I1 माइनस I2, और यहां से I2 प्लस I3 माइनस I1. I2 एक प्लस का एक माइनस का, खत्म. I1 प्लस का एक माइनस का, इधर खत्म. तो बचा I3. I3 विल गो टू दिस. क्लियर है? गुड. नाउ वी विल कंसिडर द लूप्स. विल अप्लाई Kirchhoff voltage law here. So let's first consider this loop A, B, C, A. Consider A, B, C, A. So through A, you can see I2 current is there. So we'll write 4 I2 first, and then we have B. B में resistor is 2, current is I2 plus I3.
So we'll write 2 in bracket. We will write I2 plus I3. And here we have this I1 through this 1 ohm resistor. Write 1 also. No need to write वैसे. 1 into I1 is I1. Okay. Clear है ना? I'm not writing. So it's equal to 10. Now simplify this. So it's 4I2 plus 2I2 is 6I2 plus 2I3 plus I1. 4I2 plus 2 into I2 plus I3 plus, ठीक है. हाँ जी, क्या इक्वेशन आई बेटा? पहले I1 1 2 3 लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं. I1 plus 6I2 plus 2I3 is equal to 10. Let this equation be 1. Now consider ADCA. A, D, C, A. इसमें क्या होगा कि 4I1 plus I1 minus I2 की करंट की डायरेक्शन में और नहीं, हम वहीं से निकल रहे हैं, पॉजिटिव ही आएगा बेटा. करो पहले, आ जाएगा. आगे लक्ष्य समझ आ रहा है ना? A D C A. So A में से A to D 4 है, 4I1 minus I2. 4I1 minus I2 फिर 2. अच्छा, ये नेगेटिव जा रहा है, देखो वी आर गोइंग अगेंस्ट दिस ना. यही बोल रहे थे. -2 I2 प्लस I3 माइनस I1. अब इसके डायरेक्शन में ही है तो 1 ओम है. 1 into I1 is equal to plus 10. Now simplify this. 4I1 minus minus plus 2I1. 4I1 plus 2I1 is 6I1, 7I1. I2 में we have minus 4I2, minus 2I2, minus 6I2. I3 में we have minus 2I3, just minus 2I3 we have, है ना? ठीक है ना? वेरीफाई करना है, कॉपी नहीं करना. Is equal to 10. This is second equation. Now consider, because we have 3 different variables, so we need 3 different equations. A, B, E, D, A. Start from A, go to B, then to E, D, and to A. Like this. So 4I2. 4I2. Now we are going towards I2 से ठीक जा रहे हैं हम. ठीक है, अब इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना? I3 के अगेंस्ट जा रहे हैं. बट यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है तो विल नॉट राइट एनीथिंग. यहाँ पे भी इसके अगेंस्ट जाने को फर्क नहीं पड़ता. अब इधर आ जाओ, इसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं बेटा, प्लीज ओपन द गेट. इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, सो वी हैव 4 बट विद अ नेगेटिव साइन विल राइट -4 I1 minus I2 is equal to, see we are entering to the positive and leaving from the negative, so we'll write -5 here. समझ आ गया नेगेटिव क्यों लिया मैंने? 4I2 यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है. फिर यहाँ पे रेजिस्टर है 4I1 minus I2 with a negative sign and is equal to -5, not 5, it's -5. क्योंकि आप पॉजिटिव से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव से लीव कर रहे हो. आपका लूप देखो, डायरेक्शन आप ऐसे जा रहे हो. जहां पे आप करंट के अगेंस्ट जाओगे वहां पे आप नेगेटिव लोगे. जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया था ये, क्योंकि इधर करंट इधर फ्लो कर रहा है, वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन. और सेल में वहां नेगेटिव लोगे जब आप एंटर करते हो पॉजिटिव से और लीव करते हो नेगेटिव. उसको भी -5. We are not bothering I3, we are bothering this positive and negative terminals. आप बोल सकते हो, उस तरह से भी बोल सकते हो हाँ, कि करंट वहां से वहां जा रहा है. ऑब्वियसली करंट वैसे ही जाएगा जैसे आपके वो टर्मिनल्स होंगे. ठीक है, चलो जी, विल गेट वन मोर इक्वेशन. अब 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन काफी है. Yes, so 4I2 minus 4I1, so let's write -4I1 first. 4I2 minus minus plus 4I2 is 8I2 is equal to -5.
Let this be third equation. Now solve these three equations to get the value of I1, I2, I3. Do one thing, add 1 and 2 first. 1 plus 2 gives. इससे फिर 6 एलिमिनेट हो जाएगा। Yes, 2 and I3 eliminate हो जाएगा और 6 I2 भी eliminate हो जाएगा. Oh, great. 2 I3 minus 2 I3 गया. 6 I2 minus 6 I2 गया. We have 8 I1. 5/4 आ जाएगा। 8 I1 is equal to, we are adding na? We are adding na? So it's equal to 20. So this implies I1 is equal to 20 by 8. Write properly. 5 by 2. 4 to the 8, 4 5 so 20. 5 by 2 ampere. 2.5 ampere. Write in decimal. So now you have got the value of I1. You can easily find the value of I2. Yes. Now from 3 minus 4. Put the value of I1 here. It's 5 by 2 plus 8 I2 is equal to minus 5. So this implies 8 I2 is equal to minus 5. 2 1s are 2. 2 2s are 4. ठीक है, minus 10 हो गया, यहाँ के plus 10 हो जाएगा. ठीक है, it's 5. We are getting the same value. Okay, it's 5 by 8. This implies I2 is 5 by 8 ampere. Write in decimal. 0.48 625 नहीं आ रहा, मैंने गलत कर दिया. 8 6 48 20 8 2 16 40 8 5 40. ठीक तो है. Okay, now put the value of I1 and I2 somewhere in the first or second equation, wherever you like. So I1 is 5 by 2 and plus 6 I2 is 5 by 8 plus 2 I3 is equal to 10. Now solve this for I3. 8. 2 I3 is equal to 10 minus 5 by 2 minus 15 by 4. This implies 2 I3 is equal to, take the LCM, it's 4. 40 minus 2 5s are 10 minus 15. It's minus 25. 40 minus 25 is 15 by 4. I3 is 15 by 8. In decimal, it's 8 1s are 8.70. 70. 64. 1.60. 56 405. In the meter bridge experimental setup shown in the figure, the null point D is obtained at a distance of 40 centimeter from end. Okay, of the meter bridge wire. If a resistance of 10 ohm is connected in series with R1, we have connected one resistor of 10 ohm. Then null point is obtained at AD equals 60 centimeter. Then we get null point somewhere here. And it is 60 centimeter. Let this point be D dash. Okay. We have to calculate the values of R1 and R2. Null point is the point where galvanometer shows no deflection and a bridge is balanced. है ना? यही होता है ना null point, जहाँ पे galvanometer को deflection नहीं show कर रहा और bridge balance हो. So how do we write for balance condition? We write for a meter bridge, we write ratios of the resistances R1 by R2 is equal to length of this section of wire. Yes, it's AD by CD. So AD is 40 centimeters, so CD will be 20 centimeters. No, it's 100, no, total is 100. So it's 60 centimeters. What will you get? It's 2 by 3. Let this be 1. Okay.
अब इसमें ट्विस्ट है, क्या है? We have connected a 10 ohm resistance in series with R1. ठीक है? Now we have a resistor, 10 ohm resistor in series with R1. So new resistance will be R dash, R1 dash. Let's take R1 dash for this. Okay. So R1 dash is R1 plus 10 ohm, because in series combination we simply add the resistances to get the equivalent resistance. Now this null point has been shifted to 60 centimeter. This time we will write R1 dash, because now the resistance, the value of resistance has been changed. So instead of R1, we will write R1 dash divided by R2 is equal to, now this is AD dash now. This position, जो गैल्वेनोमीटर का जो null point है, ये shift हो गया ना D dash में, तो AD dash is the new position upon CD dash. Okay, so now for this R1 dash, we will write R1 plus 10 divided by R2. AD dash is 60, and because AD dash is 60, therefore CD dash is 40 centimeter. It's 100, total is 100, so it's 40. This is 3 by 2. No, अपना अपना करो, यहाँ से verify कर लेना बाद में. So R1 by R2 plus 10 by R2 is equal to 3 by 2. अब R1 by R2 is 2 by 3. 2 by 3 from 1. Therefore, we can write 2 by 3 plus 10 by R2 is equal to 3 by 2. In bracket, you will write from 1. This implies 10 by R2 is equal to 3 by 2 minus 2 by 3. Now solve this. We'll get 6. 2 3 is 6, 9. 3 2 is 6, 4. It's 5 by 6. Cross multiply this to get the value of R2. So we'll get 5 R2 is equal to 10 into 60. 10 into 6 is 60. So R2 is 12 ohm. R2 is 12 ohm, right? R1 8 आ जाएगा. Put the value of R2 here in this equation. In first equation as R1 by R2 is equal to 2 by 3. In bracket, you will write from 1. This implies R1 is equal to 2 by 3 into R2. Now put the value of R2. 2 by 3 into 12. 3 ones are 3. 3 fours are 12. Answer is 8 ohm. Write your final answer. R1 is 8 ohm. R2 is 12 ohm. And at the end, you can enclose your answer in the box like this. The reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it is 2.2 volt. When the terminals of the cell are connected to a resistance of 5 ohm as shown in figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. Find the internal resistance of the cell. So small value of E is given, it's 2.2 volt. Voltage is given 1.8 volt. Load resistance is given, R is 4 ohm. We have to find internal resistance, small r. Okay. It's 5 ohm. Okay, we'll take 5 ohm. Okay. So this is the relation, small r is E minus V upon V into R. Using this relation, we can find the value. This is 5, na? Put the values here. It's 2.2 minus V is 1.8 divided by V is 1.8 into R. R is 5. 0.4 आ रहा है 1.8 into 5 20 by 18 1.11. This is the internal resistance. 1.11 ohm. Battery of EMF 12 volt, internal resistance 2 ohm. 4 ohm is the load resistance. E is given, small r is given, capital R is given. Show that
A voltmeter, when placed across the cell and across the resistor in turn, gives the same reading. E is given small r and capital R. These values are given. E is 12 volt, small r is 2 ohm, and capital R is 4 ohm. Yes? We can find total resistance of the circuit. Load resistance plus internal resistance, they are in series. So 4 ohm plus 2 ohm is 6 ohm. This is the total resistance. Yes? Ek kam ho gaya? We can also find current flowing in the circuit. It's E upon capital R plus small r. Net resistance को net EMF से divide करोगे, then you'll get the value of current. It's 2 ampere. Any doubt? यहाँ तक clear है? See, when voltmeter is placed across the cell, then terminal potential difference. How do we find terminal potential difference? E minus IR. Okay. V is E minus IR. So if we connect voltmeter across the cell, then you can find terminal potential like this using this formula. Put the values here. E is 12. I is given. It's 2 ampere. Resistance is internal resistance is 2 ohm. You'll get 8 volt. This is the terminal potential difference. Second, when voltmeter is placed across the load resistor R, then potential difference is V is equal to I capital R. Again, it's 8 volt. So from here, we can conclude that both V and V dash are equal. You have done this question already in the class. In the given circuit in steady state, obtain the expression for potential drop, okay, the charge and the energy stored in the capacitor. So in steady state, we assume that capacitor is fully charged and hence no current flows through the arm BE of the circuit. Subtract this V from 2V to get the net EMF. Okay. The effective EMF of the circuit is 2V minus V. It's equal to V. Effective resistance of the circuit would be 2R plus R. See if we are assuming this as not existing, if we are assuming that this part of the circuit is not existing, then we can consider both the resistors in series. And in series, we simply add the resistances to get the effective resistance. No? So 2R plus R is 3R. Now we have got the, no, see, if we are assuming the middle part portion, parallel में कब होता है? This is not in parallel, this is in series. Parallel में तब होता है जब आपका दोनों को ब्रांच से निकाल के आप उसमें EMF से कनेक्ट करते हो तो उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर आप ये मान के चल रहे हो कि बीच वाला पोर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एक बॉक्स जैसे ही तो बन गया. नो, बॉक्स जैसे ही बन गया ना. अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि बीई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज है ना, उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, उसको तो क्रॉस कर दो ना बीच में से. वो क्रॉस हो गया बीच में से, बचा क्या? ये बॉक्स बचा. तो ये बॉक्स क्या है? ये सीरीज है. ठीक है. तो 2V minus V is the effective EMF and net resistance is the series combination resistance 2R plus R. ठीक है. So because we know effective EMF and effective resistance, so we can find current flowing in the circuit. Current is effective EMF divided by effective resistance. So V upon 3R is the current in the circuit. Clear? Any doubt? बहुत बढ़िया रिजल्ट. रेजिस्टर्स होते हैं ना एक सर्किट में, अगर 10 रेजिस्टर्स है तो उनको अरेंज करने के जो तरीके हैं ना वो n फैक्टोरियल से पीएनसी रखेंगे. पीएनसी लगाएंगे.
पढ़ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड ई कैसे फाइंड करोगे? इट्स इक्वल टू 2v माइनस आई द करंट मल्टीप्लाई बाय 2r इफेक्टिव रेजिस्टेंस. Okay. Put the values, you'll get the potential difference across B and E as 4/3B. I is B upon 3R. Now you simply have to put the value of I here. You'll get, after solving this, you'll get 4/3B. So first part is potential drop across C. So potential drop across C is 4/3B minus B. It's B by 3. Potential difference across C is 4/3B. This 4/3 is the potential difference across B and D, and minus B करोगे इसमें से you'll get V by 3. This is the potential difference across C. And the charge is Q is equal to CV. V is V by 3. So put V by 3 for V and you'll get this CV by 3 as charge. Energy stored in the capacitor is half CV square. So in place of V, we will write V by 3. So it's on solving this, you'll get CV square by 18. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना. कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे? अगर ये एंड्स के अक्रॉस 4/3 भी है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, तभी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा. क्योंकि जो आपका 4/3 भी है, दिस इज इक्वल टू योर V प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C. If you want to find potential potential difference across C, if you have to find potential difference across C, then you have to subtract V from 4/3V. Only then you can find potential difference across. And once you get this value of V, you can easily find charge by Q is equal to C where energy stored as half CV square. Can be done easily. ये प्रॉब्लम थी. ये जो है, ये जो स्टेप है बीच में, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. एक बार ये आपको क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है, उसके नीचे भी कुछ नहीं है, यू कैन डू वेरी इजीली. ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर, रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से?